मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था याद करने में सीन को, और अशनूर ने एक बार पढ़ा और साइड में पेपर रख के बोला कि हाँ चलो करते हैं। तो मुझे पहले लगा कि यार ये अपने काम को हल्के में ले रही है। My first impression of Adil was, oh my god, he's so tall. He's wearing his sunglasses, and then I also thought अंदर sunglasses कौन पहनता है? She has a problem with my sunglasses. There's an incident, तो हमारा सब लॉक वॉक हो गया एंड आई थिंक शूटिंग के 3 दिन पहले रात को इनके पिताजी का फोन आया। क्या हुआ This I don't know. मुझे नहीं लगता हम आपकी फिल्म कर पाएंगे अभी। मैं का 3 दिन में शूटिंग है, सब निकल रहे हैं, वो सब प्लान हो गया, टिकट विकेट बुक हो गई। आई सेड सर क्या हो गया? सिंह नहीं हमको तो नहीं लगता हम आपकी पिक्चर। There was some scene that we were not comfortable with, but then ma'am understood and she molded that scene. I need to watch it now. I सब said बात it कर रहे हैं, मुझे भी देखनी है। Yeah. क्या ही करूँ मैं ही हूँ। The thing is, they've increased the speed to 2x, which is why my voice sounds very funny. That is not my voice, guys. I had a very sweet voice, but yeah, it's just going viral again and again for God knows what. Hi, this is Ratna, Ashnoor and Adil. And you're watching us on Bollywood Hungama. When I met Ashnoor for the first time, my first impression was again हुआ ये था कि एक सीन करना था हम लोगों को साथ में, और वो उसी टाइम पर वो सीन आकर दिया था। मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था याद करने में सीन को, और अशनूर ने एक बार पढ़ा और साइड में पेपर रख के बोला कि हाँ चलो करते हैं। तो मुझे पहले लगा कि यार ये अपने काम को हल्के में ले रही है, फिर देखा तो उसको सब याद है। तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यही था कि यार ऐसे कैसे कोई इंसान एक झटके में इतनी जल्दी से कोई एक लंबे सीन को याद कर सकता है। सो देन द फर्स्ट इंप्रेशन वाज टू अंडरस्टैंड दैट ओके आई एम डीलिंग विद समबडी हु इज a brain child who's smart and intelligent. So that was my first impression. Right now it stays the same. I think she's a very intelligent, very sincere, very focused girl. I think she's a great actor. तो वही जो मेरा पहला जो impression था वही अभी थोड़ा exaggerated और बड़ा हो चुका है. When I met Ratna ma'am for the first time, I already knew a lot about her because she's a fantastic director. I've seen her work. तो काम को से related तो first impression था नहीं क्योंकि वो पहले से ही बना हुआ था. But as a person, I got to know her for the first time, and she's somebody who makes you comfortable. She's somebody who would, make you own the space as an actor. So that was my first impression, and then when I worked with her, then I just only ended up discovering more about her. So I just have more and more respect for her right now. My first impression of Adil was, oh my god, he's so tall. Because when he walked in, I guess I was already sitting there and we had our mock shoot together. Yeah. And he's wearing his sunglasses, and then I also thought, अंदर sunglasses कौन पहनता है? This is something I also told him today during the premiere. She has a problem with my sunglasses. He loves his sunglasses. He's obsessed with sunglasses. He can wear sunglasses everywhere. So this was the first impression. But I mean, when I got to know him, I've already mentioned that in other interviews as well, that he is a very chivalrous, caring, kind guy. He would make you feel really comfortable and safe when he is around. And he was a delight to work with. Fab actor, obviously, all of us know, but an even more amazing human being is what I would say. Ratna ma'am, I remember the first time we'd met for the narration itself. तो मैं थोड़ा ऐसे की थी कि okay, hello ma'am, how are you? A little formal and all of that stuff. But after I worked with her, so this was the first project. Neither of my parents accompanied me because of course I'm grown up now. But ma'am made such a comfortable, safe space on set, such a safe environment on set to work around that I didn't feel like I'm alone or like I'm working. It felt more like a family. And I always say with especially a female filmmaker, the nuances of the film, the subtle things that happen, the emotions, they're really enhanced. I don't know, it's just basic nature, it just happens. But especially with ma'am, there was this trust that was formed, and she's a very chill director. Like, वो डरा के रखती है, इतने लोगों को रुलाया भी है सेट पर. But ये कब हुआ? हाँ ये हुआ. काजल रोई थी ना. काजल रोई थी.
But she's also so chill and like she's so vibey to work with that you really enjoy working with her, and it was a delight to be on set, and I really look forward to the next. So when I met Ashnoor, I thought she's at least 24, and both my male actors were in their 30s, so I was fine. That was my first impression. But when we went to the set, I realized she's 19, and I said, "My God, मैंने एक बच्चे को उठा के सेट पे ला के रख दिया है." So there's an incident. तो हमारा सब लॉक वॉक हो गया, and I think शूटिंग के 3 दिन पहले रात को इनके पिताजी का फोन आया. क्या हुआ This I don't know. मुझे नहीं लगता हम आपकी फिल्म कर पाएंगे. अभी मैं का 3 दिन में शूटिंग है, सब निकल रहे हैं, वो सब प्लान हो गया, टिकट विकेट बुक हो गई. आई सेड सर क्या हो गया? सिंह नहीं, हमको तो नहीं लगता हम आपकी पिक्चर. There was some scene that we were not comfortable with, but then ma'am understood and she molded that scene. So there was written in the script that they, they like each other and they decide to make out. I mean, whatever, some line was there. So I think सर ने वो लाइन पढ़नी थी and he just backed out. ऐसे नहीं वो जो करेगी जितना करेगी हमको. So yeah, that is before we went to the set. अभी कहीं लव स्टोरी बन नहीं रही है, मतलब मुझे नहीं याद पड़ रहा कौन सी लव स्टोरी मैंने देखी है. वेरी फ्यू, मतलब देयर इज मोर ऑफ अदर काइंड ऑफ मूवीज दैट वी आर मेकिंग, वेरी फ्यू लव स्टोरीज. And I think love is an eternal emotion, and if you can tell a good story, people will watch it. It's a nice story. I think a storyteller will always tell a story that he or she believes in. So I believe in that story. So I was not thinking specifically that I am trying to break a genre or I am trying to make something. This is a story I believe in. I think I have made a good film, right? Yeah, Of absolutely. course, 100%. देखिए मैं थोरोली इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि हर इंसान के अंदर हर इंसान होता है, कि आपके अंदर अच्छाई भी है, आपके अंदर बुराई भी है, आपके अंदर सच्चाई भी है, आपके अंदर झूठ भी है. जितने भी कैरेक्टर्स आपने देखे होंगे इन सिनेमा और फिल्म, इंडियन और इंटरनेशनल, वो जो भी जिस भी पर्सनालिटी को पोर्ट्रे करते हैं वो पर्सनालिटी आपके अंदर भी है. एज एन एक्टर आप उसको बस बाहर निकालते हो. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपेंस कि आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो आप रिलेट करते हो बहुत सारी चीज़ें, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो आप अपने आप के अंदर की चीज़ों को भी डिस्कवर करते हो. अगर मैं धैर्य प्ले कर रहा हूँ, हु इज़ अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन हिम, ही इज समबडी हु बिलीव्स इन रिलेशनशिप्स, हु बिलीव्स इन इमोशंस, एंड ही गिव्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस. तो जब मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रहा था तो आई एज अ पर्सन ऑल्सो आई गिव अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड इमोशंस टू माई फैमिली, टू माई रिलेशंस. आई बिलीव इन लव एंड आई एम ऑल अबाउट दैट. बट व्हेन आई वाज प्लेइंग दैट आई ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट आई हैव अ लॉट ऑफ व्हाट इज देयर इन मी एज वेल. ये खूबसूरती है एक्टर होने की भी, कि आप एक इंसान होते हुए भी आप इतने सारे इंसानों की जिंदगियां जी लेते हो. A lot of similarities with Shreya, except for the fact that she only prays for having a good husband. But apart from that, yeah, I mean Ashnoor is very career focused, this and that, but whatever. Apart from that, I guess I am Shreya, the way she's so bubbly, outgoing, chirpy, loves love, is about life, wants to experience a lot of things and everything. So I guess I really did relate with Shreya. But why don't you pray for a good husband? वो मैं नहीं है बकेट लिस्ट में भी. पहले अच्छा. मुझे बाकी चीजें करनी है. I wanna go Some time later. on a world. हाँ, अभी बहुत टाइम है. I guess I won't call it connections. I would call it your reputation, right? The way you are on set, the way you behave on set, how professional you are, and your work speaks for itself. Connections से आप क्या ही कर लोगे? I really don't think anybody would take their work so lightly that they would just give you work on the basis of your relation. They would give you work on the basis of your credibility, on the basis of your talent, and on the basis of how professional you are. So ठीक है, relations, connections, it's basic human nature कि if you are in a working space or in any space, you do form friendships, you do form connections. लेकिन I don't think so that impacts your work.
आई नीड टू वॉच इट नाउ. I'll सब send it बात to कर रहे हैं. मुझे भी Gopi. देखनी है. Yeah. क्या ही करूँ मैं ही हूँ. I mean, you रिएक्ट know, तो एक ही बार होता होगा ना पहली बार, हाँ. बार बार तो क्या ही but react you करेंगे. know, the thing is they've increased the speed to 2x, which is why my voice sounds very funny. That is not my voice, guys. I had a very sweet voice, but yeah, it's just going viral again and again for God knows what. Hi, this is Ratna, Ashnur and Adil. And you're watching us on Bollywood Hungama.